Hi, first of all, again a warm welcome to our particular YouTube channel, Education with KRCHE. We all were connected for the topic of entrepreneurship development as well. And today, and from today actually, we are going to stay connected for this particular topic, what we call business ethics and CSR. And what we are going to learn particularly in this topic for today's session is all about politics, ethics, and how they are related as well as they are two separate ways, right? So let me introduce myself. Many of you are must aware of me if you have seen that entrepreneurship development series. So I am Assistant Professor Vikas from Kosturam College of Education's Department of Commerce and Management, right? So without getting delaying or without just waiting furthermore, just start that topic. So what we are going to discuss today is all about business ethics and CSR, and that too the particular topic of politics and ethics. Now, first of all, we have to understand that when we understand this particular topic, politics. So, what are the scope of politics basically? So, first of all, political theory, which is the basic of theory's political aspect, right? What is actually the political theories actually are, and that is the scope of politics. Now, second point, this is a point where we all are well aware of with the term politics. The first one is national government and regional and local government. At current scenario, we can say national government is like our NDA government led by PM Narendra Modi, right, the prime minister, and the regional and local governments are like the state governments and something like this. So these are the political institutions. See, when we discuss about politics now, so we are actually discussing about these political parties and political norms and political views of the particular person or particular organization. We are going to discuss that, but politics is not only limited to this area as well. Listen to me very carefully. Politics is also in the organization. Every organization has the certain amount of politics. Not only the organization, even the friends group. You are in the friend group, I am in the friends group, we all are having some friends, we all are having some family, so we all are also connected through the politics. The reason being कि politics is not only कि इसको बढ़ रहा है तो इसको नीचे खींच दो. Politics is somehow where you apply your reasoning ability to the real life situations. For example, hypothetically speaking, आपके घर में एक बर्थडे है बट यू वांट समवन टू गेट इनवाइटेड समवन, तो यू विल स्टार्ट सेइंग कि अच्छा ये भी वो रिलेटिव है हमारे, ये भी वो रिलेटिव है हमारे, तो ये भी एक पॉलिटिक्स ही है. Generally what happens with us when we discuss the term politics, we just explode it at the level जहाँ पे politics is always terms as नेशनल पार्टी, गवर्नमेंट बनाओ, ये सब पॉलिटिक्स सिर्फ वहां पे नहीं, पॉलिटिक्स एक छोटे लेवल पर भी होती है. इवन छोटे बच्चे, द 6th 7th क्लास पीपल डू पॉलिटिक्स. लेट मी टेल यू हाउ. होमवर्क करके नहीं लाए, दिल से एक लाइट कट गई थी, दिल से कि कॉपी पे कॉफी गिर गया था, दिल से कि कहीं घूमने चले गए, दिल से किसी की डेथ हो गई थी. तो व्हाट आर दीज आर द एक्सक्यूजेस जहां पे समहाउ वो पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं कि समहाउ हमारा जो टीचर है वो इन्फ्लुएंस हो जाए. दो इट इज अ नेगेटिव पॉलिटिक्स, बट दिस इज द पॉलिटिक्स. समटाइम्स पॉलिटिक्स इज आल्सो गुड कि आप ऑर्गेनाइजेशन में ये चाहते हो, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगेन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एबीसी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है एक्सवाईजेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज होना, बट देयर आर प्रोमोटर्स हु एक्चुअली थिंक कि एक्सवाईजेड से अच्छा पीक्यूआर से मर्ज हो जाओ. तो पॉलिटिक्स विल बी प्लेइंग द रोल हियर कि एक्सवाईजेड के सपोर्ट में कुछ होंगे, कुछ पीक्यूआर के सपोर्ट में होंगे. सी, पॉलिटिक्स डजंट मीन्स राइवलरी. पॉलिटिक्स का मतलब राइवलरी नहीं होता कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. नो नो नो, पॉलिटिक्स डजंट मीन्स राइवलरी. पॉलिटिक्स मीन्स सिंपली हाउ यू आर converting the thoughts of the opponents into your favor. That's it. Now, somehow in this degree we extend the limits also. This is the politics at the organization level, and there are political parties, groups, and public opinion when we talk about politics as a whole, with what you understand. For political parties, right now we are having the leaders party in the form of NDA's BJP, Bharatiya Janata Party. We have Congress, we have Aam Aadmi Party. We have so many political parties in India, thanks to our democracy. When we are having so many political parties, so it's self-explanatory
that we will be having political groups as well as different public opinions. It could be कि जीएसटी को लेकर आपका ओपिनियन कुछ हो सकता है, मेरा ओपिनियन कुछ, it could be like कि डिमोनेटाइजेशन को लेकर आपका ओपिनियन कुछ हो सकता है, मेरा ओपिनियन कुछ हो सकता है. Recently I had heard of this particular thing कि Delhi government had just said कि within 20 or 25 days, I don't know the exact numbers of days, दिल्ली के सारे potholes को they will be like filling it up, right? हो सकता है कि आपका ओपिनियन कुछ हो, मेरा ओपिनियन कुछ हो, right? This is public opinion. When there is politics, there will be a public opinion part. And when I am talking about public, I am not talking about the people who are living in the state. पब्लिक मीन्स जहां पर भी पॉलिटिक्स हो रही है उसका पर्टिकुलर पॉपुलेशन क्या है. फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 7 लोग पीक्यूआर के मर्ज के फेवर में है एंड 7 लोग XYZ में, तो ये 7 लोग पब्लिक हो गए और ये 7 लोग पब्लिक हो गए. दिस इज इट, राइट? एंड अगेन, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली फैमिली, इट आल्सो रिलेट्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस में जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो व्हाट टर्म वी एक्चुअली यूज इज जियोपॉलिटिक्स. जियोपॉलिटिक्स. And when we talk about the organizational politics, so we say organizational level politics, geopolitics. These are the terms basically we use. So let me give a small brief of international relations. Recently, what happened? France and USA are very good friends. Actually, they are very important ally of each other. But somehow, a nuclear submarine deal happened in between USA, UK, and Australia. जो कि डील फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होनी थी. तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने डील जो है फ्रांस को छोड़कर यूके और यूएस के साथ कर दिया. दैट्स गुड. एंड इस चीज से समहाउ फ्रांस गॉट डिस्कम्फर्ट लेवल पे, जहाँ पे ही वाज थिंकिंग, फ्रांस इज थिंकिंग कि समहाउ हमारे साथ गलत हुआ. तो व्हाट दे डिड, they just called their diplomat back to the state, and this was the first time in the history, actually not first, बहुत बहुत टाइम पहले हुआ होगा ऐसा भी हुआ भी को कि फ्रांस के डिप्लोमेट्स यूएसए से वापस फ्रांस में आ गए. सो दिस वाज द साइन कि फ्रांस इज समहाउ एंग्री ओवर यूएसए. फिर जो भी प्रेसिडेंट ने, जो बाइडेन एंड इमैनुअल मैक्रोन, द प्रेसिडेंट्स ऑफ बोथ कंट्रीज, दे बोथ मेट and they have just sorted out the distances. But international relations are also important when it comes to the politics, right? I gave you the simple brief. और इस डील से इंडिया को तो बेनिफिट हुआ. ये द रीजन बीइंग इंडिया एंड फ्रांस हैड डीपेंड देयर रिलेशनशिप्स आफ्टर द डील ऑफ यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. You can just google the term AUKUS, AUKUS. You will get to know everything. So this was the very simple small brief of geopolitics when it comes to the international relations. And when we talk about politics, so international relations not again in political level but also in organization levels. ITC, let's suppose ITC एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी है, तो लेट्स सपोज आईटीसी के जो विंग्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, हर जगह स्प्रेडेड है. देन व्हाट विल बी डन, तो उनके अंदर एक अलग पॉलिटिक्स होगी कि इंडियन ब्रांच से इतना प्रॉफिट आ रहा है बट यूके ब्रांच से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो दे विल बी प्लेइंग अनदर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? सो पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट जाके वोट दो एंड गवर्नमेंट बनाओ. पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर, राइट? नाउ वी हैव अंडरस्टूड द टर्म पॉलिटिक्स. नाउ व्हाट इज एथिक्स? ओके, वेरी ब्रीफ, बहुत सिंपल. What is right and what is wrong? क्या सही है और क्या गलत है? जो चीज इसको इलेबोरेट कर रही है दैट इज एथिक. क्या सही है एंड क्या गलत है, दैट वो एथिक्स है. द स्टैंडर्ड्स ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट what is right or wrong or good or evil. Okay, I have turned it as standards of individual, but group also. The standards of groups and individuals, or whatsoever you want to call, has about what is right and what is wrong. Simply just read these, you highlighted points. What is right and what is wrong? What is right or wrong? What is good or evil? That's it. So this is the entirely thing about ethics. जो चीज आपके internal है, ethics is correlated with values. What value you possess? क्या आपके लिए क्या सही है, क्या गलत, right? This exactly is the term what we call for the ethics. कि वो टर्म जो आपको एथिकली सही और गलत एक पोस्ट पर आके खड़ा कर दे. either it will be right or it will be wrong. That's it. और जो चीज ये कर रही है that is ethics. Ethics is something intellect. कुछ इंटेलेक्ट चीज, मतलब कुछ इंटरनल चीज है आपके पास, राइट? हो सकता है कुछ आप सही मान रहे हो, कुछ मैं गलत मान रहा हूँ. यहाँ पे ना तो मैं सही, मतलब हो सकता कोई भी ओपिनियन ले लीजिए. लेट्स सपोज वी कॉल अबाउट चोरी. चोरी आपके लिए सही है, मेरे लिए गलत, या फिर मेरे लिए सही है, आपके लिए गलत. तो लेकिन यहाँ पे तो मैं गलत हूँ, ऑब्वियस बात है, अगर मैं इसको सही मान रहा हूँ तो. लेकिन हो सकता है कि
यू नो एक कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए जहां पे आपका ओपिनियन कुछ है, मेरा ओपिनियन कुछ है, मैं अपने हिसाब से सही हूँ, आप अपने हिसाब से सही हो, पर ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गया। बट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटल लेवल, तो वहां पे एथिक्स एक ग्रुप के लिए बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन का रोड पर एक्सीडेंट हो गया और आप रुके या ना रुके वो आपके ऊपर है, पर मोरालिटी आपके एथिक्स होने चाहिए कि आप रुकें, एक बार चेक करें कि उस पर्सन को किसी चीज की नीड तो नहीं है, क्या पता उसको सीधा हॉस्पिटल जाना हो, क्या पता वो सिर्फ गिरा हो, चोट लगी हो हल्की सी, क्या पता सिर्फ उसको प्यास लगी हो। सो दिस इज एथिक्स एंड दिस इज वैल्यूज बेसिकली। सो एथिक इज नथिंग जस्ट द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो चाहे वो ग्रुप के लिए हो, कि what is right and what is wrong, simple। Okay, ethics is nothing but a standard which is going to tell you about what is right and what is wrong। for example, publicly फोन पे चिल्ला चिल्ला कर बात करना एथिकली गलत है या नहीं, ये आपका ओपिनियन है, लेकिन समहाउ सोसाइटी विल से क्या बातें कर रहे हो, क्यों सबको सुना रहे हो, यहाँ पे वो एथिकली रॉन्ग हो गया। सो जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखी हुई हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हो, बट कुछ आपके अपने एथिक्स होते हैं, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर द पॉलिटिक्स टर्म्स एंड फॉर द एथिक्स टर्म्स। नाउ when it comes to the business, since we all are the commerce graduates, soon or soonest you will be also, so when it comes to business, what we actually learn is business ethics, right? So ethics at the individual level is something that you relate, what I can relate. Ethic as a group level is something which you can relate as a society, I can relate as a society. But when it comes to ethics as a business level, the kind of social contract, ethic is nothing when it comes to the business, it is a kind of social contract between the society and the business. See, you cannot just separate business from the society, neither you can separate society from the business, क्योंकि दोनों के एक्टिविटीज का दोनों पर इंपैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सोसाइटी एंड दिस इज द बिजनेस। अब दोनों ही कोरिलेट करते हैं। आई मीन यू कैनोट जस्ट टेक कि अच्छा सोसाइटी से बिजनेस को अलग कर दो, तो बिजनेस कर क्यों रहा है, क्योंकि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। बट समहाउ जब तक कोई भी प्रोडक्ट सोसाइटी को बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा किसी भी सेंस में, व्हाई वुड समवन परचेज इट, राइट। एंड सोसाइटी क्या है, सोसाइटी भी बिजनेस के लिए सोचती है। हाउ, सोसाइटी विल सेंड द एम्प्लॉय, सोसाइटी विल सेंड अदर थिंग्स आल्सो। बट समहाउ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहीं लिखा नहीं है कुछ नहीं है, बट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द सोसाइटी एंड द बिजनेस, दैट्स इट। बिटवीन द सोसाइटी एंड द बिजनेस, इनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बाय विच, read it very carefully, this, the single definition says everything about business ethics, kind of social contract between society and business by which the society expects business to work in its interest, read it very carefully, by which the society expects business to work in its interest। अब यहाँ पे इट का मतलब बिजनेस नहीं है, यहाँ पे इट का मतलब है सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, you are and you will work in the interest of society। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान पहुंचे, राइट। लेट्स सपोज कि एक डिफेंस कंपनी है जो कि बॉम्ब्स बनाती है, तो वो सोसाइटी सोच रही है कि ठीक है आप बॉम्ब बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बॉम्ब को ऐसी जगह टेस्टिंग नहीं करोगे जहां पे सोसाइटी को कोई दिक्कत हो। लेट्स सपोज कि 100 एकड़ के आपने लैंड ले रखा है, वहां पे आप टेस्ट कर सकते हो, ऑब्वियस है। बट अगर आप सोसाइटी उस बॉम्ब को कहीं ऐसी जगह टेस्ट करोगे जिससे सोसाइटी के घर को नुकसान पहुंचे, फिर एक लोकेलिटी के घर को नुकसान पहुंचेगा, तो दिस इज रॉन्ग। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें सोसाइटी को हार्म पहुंचे, एंड बिजनेस विल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी every single time, even when it comes to the stakeholders, you know, stakeholders, when we call कि एक बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं, एंड व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। स्टेक होल्डर्स काइंड ऑफ, सी, ये एक कंपनी है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज अ कंपनी, और जो भी इस कंपनी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, दे आर द स्टॉक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स। फर्स्ट शेयर होल्डर, शेयर होल्डर आर द स्टेक होल्डर क्योंकि इनको इनके प्रॉफिट से मतलब है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज आल्सो द स्टेक होल्डर ऑफ अ कंपनी, क्योंकि समहाउ गवर्नमेंट को इनके से टैक्सेशन एंड अदर पॉलिसीज में हेल्प चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल कि आप ये काम करो, ये काम मत करो, सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑल। थर्ड, कंज्यूमर, सी कंज्यूमर और बिजनेस दे आर यू नो आपस में रिलेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर थिंग, क्योंकि कंज्यूमर भी तो बिजनेस पे रिलेट कर रहा है। तो जो भी इस बिजनेस से रिलेट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर द स्टेक होल्डर्स। एंड हु विल रिलेट डायरेक्टली, स्टेक होल्डर, एम्प्लॉय, राइट।
and who will relate indirectly to government, consumer, and it could be also your suppliers. कोई भी हो सकता है. तो बेसिकली जो आपके बिजनेस से रिलेट कर रहे हो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, दे आर द स्टेक होल्डर्स. Get it? When you are working, and is also society is also a stakeholder as a whole. So when we are talking about stakeholder thing, so it is a term which we use for the people or the organization or the institution which are related directly or indirectly with the organization. And when we call about business ethics, so business ethics के according social contract between society and business by which society expects, means by stakeholders expect that business will work in its interest. कभी कोई ऐसे decisions ले जाएंगे जो society as well as business को harm पहुंचे. Now there's a term code of ethics. We have understood ethics, we have understood politics, we have understood organizational politics and business ethics. Now there's a term code of ethics. We have to understand this particular thing ki what is actually code of ethics. When, mark my words what I'm telling you, when you just draw a draft, you means business, when a business drafts that what should be done in that organization and what should not be done. I'm talking it again. When a business drafts in a written format that what should be done in the organization and what should not be done in the organization, these are code of ethics. I'm repeating it again to make you clear. Please read it, listen it carefully. When a business drafts, when a business drafts the guidelines, the rules, regulations, whatever you want to say, regarding the ethics they should adopt while considering something right and wrong in their organization is code of ethics. So basically अगर हम और sum up कर दें तो code of ethics is nothing but a written document or written responsibilities की draft जहाँ पे बिजनेस ये बताता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें सही और ये चीजें गलत है. फॉर एग्जांपल एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो लिख देता है कि वी वोंट फायर एनी पर्सन, कभी भी हम कभी किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकालेंगे. तो कोड ऑफ एथिक्स हो गई, लिख दिया उन्होंने. ठीक है. सेकंड, इट कुड बी लाइक हम सुबह आते ही सामने एक मंदिर है वहां पे माथा टेकेंगे. इट कुड बी डन आल्सो, मतलब हालांकि इतना कोई लिखता नहीं बट दिस कुड बी डन आल्सो. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, आखिर क्यों? See, first one, very important. See, customer protects the customer. The point is when we talk as a customer or consumer now, so we have to understand the customer or consumer is the king of organization. Customer and the consumer is the king of organization. If you are not able to satisfy the customer now, you are not able to make the profits as well. So कस्टमर एंड कंज्यूमर इनको प्रोटेक्शन के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाते हैं. सी व्हाट एक्चुअली पॉइंट इज, इफ अ बिजनेस इज फॉलोइंग द पर्टिकुलर कोड ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो भी प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कर रही है, तो कंज्यूमर इज रिलायड दैट see I am also a consumer, you are also a consumer, I am relied on this particular thing कि I have purchased a phone. Let's suppose कि मैं यहाँ पे मिसगाइडेड नहीं हो रहा. लेट्स सपोज कि एडवर्टाइजमेंट में कोई बोल रहा है कि 4 GB का रैम है, 64 GB के हार्ड डिस्क है, ऑल एंड ऑल. मैं फोन यूज करता हूँ, 4 GB रैम डब्बे पे लिखा हुआ है, बट अंदर मुझे यूज करके पता चलता है कि इट्स ओनली 2 GB रैम. यहाँ पे आई हैव बीन मिसगाइडेड, आई हैव बीन मिसलीडेड. दिस शुड नॉट बी डन. And when you or any organization follows the code of ethics what had been drafted, the consumer is somehow trusted, somehow relaxed कि okay, if I'm going to purchase this particular thing, तो कहीं ना कहीं I'm not going to misguided and mislead. For example, Apple iPhones या फिर iPad and all these things, we believe कि privacy पे वो they won't just sacrifice. For example, our organization like Kasturam College of Higher Education, people believe that in our organization we especially keep our focus on academics and discipline, right? Academics and discipline. So this is a code of conduct. What code of ethics? What we follow? We have to be good in academics. We have to be strict with discipline. That's it, right? So the people who are sending their word to us, they know the students will be like academically edgeful when it comes to the Kasturam College of Education, and they will be having in the discipline in their veins also. So this is how protects the consumer. A organization, if it follows the code of ethics, consumer will believe that they are protected. Second, promote employment ethics. I already told you about stakeholders. So employers are also your stakeholder. If your employees
are happy with the organization's management and organization's structure and all these things, your business will grow. See what happens. What happens ki, if you are not taking care of your employee, na, employee will not take care of their work, and if employer will not take care of work, the profit of organization will suffer, and at then it's the loss of that particular entrepreneur. So fair hiring, promotions, health and safety of the employees, job security of the employees, these are the basic things जो code of ethics में लिखे होते हैं. Fair hiring means we will hire the people fairly. It's not going to be that we are going to hire people on the basis of sex, on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of ethnicity, on the basis of language. Now we will hire on the basis of simple thing कि हम एक टेस्ट लेंगे, quantitative test which will be termed as aptitude test as well. तो उसके बाद हम interview लेंगे, then we will be having whatever what the procedure is. एक fair, and these are the terms which are always written, in the code of ethics of the organization. Okay, I hope I'm clear to you. Second point is help the firm. See, it's not only organization which forces on code of conducts or code of ethics, or how you should perform in the society. Government also performs its responsibility when it comes to the code of ethics wala thing. And how governments perform this particular thing? Government had drafted some laws कि you have to do this. I mean, let's suppose एक company है जिसको water pollution करना mandatory है. I mean, they will pollute the water at certain level. बिल्कुल. I mean, बिना पानी को गंदा किए हुए या फिर बिना पानी को use किए हुए, they will not be able to operate. The government will do, okay, ठीक है, if you have this particular thing, तो this is the parameter. इससे ज़्यादा pollution नहीं होना चाहिए आपकी वजह से. That's it. If they have code of ethics कि ठीक है हम भी pollution को control करेंगे, तो it will help them in compiling the law कि गवर्नमेंट ने इतना प्रिस्क्राइब कर रखा है. फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग द एग्जांपल कि 10 लेवल तक गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, और उनके कोड ऑफ एथिक्स में ये लिखा हुआ है कि हम 6 लेवल तक पॉल्यूशन करेंगे. तो ऑब्वियसली बात है कि इनका जो कोड ऑफ एथिक्स है, इट विल कंपाइल विद द गवर्नमेंट्स, राइट? सो दिस इज हाउ कोड ऑफ एथिक्स वर्क्स इन द दिस वे. प्रमोट्स हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन. सी, मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है गलत, बट मैंने कहीं फेसबुक पे मीम पे पढ़ा था, बट अगर ऐसा है तो दैट्स द रियलिटी. देखो क्या होता है. There was a person of some soft drink company. उसने उस soft drink company का secret चुरा लिया, right? And it went to the rival firm. और rival firm पे जाकर उन्होंने कहा कि ये उस company का secret है जो वो बनाती है soft drink. Please purchase it, right? अब अगर यहाँ पे code of ethics नहीं होते, वहां पे अगर वो हेल्दी कंपटीशन नहीं होता, वहां पे फेयर कंपटीशन नहीं होता, तो वो परचेज कर लेता. बट व्हाट हैपेंड? वन कंपनी जिसके पास वो पर्सन सीक्रेट स्टोरी करके गया था, दे कॉल्ड द प्रीवियस कंपनी जहां से सीक्रेट चोरी हुई थी, एंड इन्फॉर्म्ड देम कि ऐसी ऐसी बात है, आपका एक एम्प्लॉय यहाँ पे आया है, प्लीज कम. एंड दिस एग्जैक्टली हैपेंड. मुझे नहीं पता this exactly happens in, sorry for the language, but this exactly happens when it comes to the healthy and fair competition, right? So when we talk about healthy competition, fair competition, it's not only about कि आगे कैसे बढ़ना है, तो तरीके से ये जो भी है, but whatever you are going to adopt, it will be having the impact on your organization, on my organization, on everyone's organization, right? That's great. So this is the importance of code of ethics. Now, when we talk about politics and ethics साथ में, when we actually talk about politics and ethics साथ में, so we have to understand one thing: they are correlated as well as they are separate ways also. Yeah. So right now we are understanding कि politics and ethics साथ में कैसे काम करते हैं, right? The first one is both ethics and politics are concrete field of public life which shape its norms and rules. See, पॉलिटिक्स एंड एथिक्स साथ में काम करते हैं. पॉलिटिक्स एंड एथिक्स साथ में काम करते हैं. वी ऑल नो दिस. अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू. पॉलिटिक्स एंड एथिक्स वर्क्स एक्चुअली पैरेलल वेज. दे आर द कॉन्क्रीट फील्ड ऑफ पब्लिक लाइफ. किसी भी पब्लिक लाइफ में दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि पॉलिटिक्स विल बी द पार्ट जो एथिकली सही होगा उसको बताने के लिए, राइट? एंड द मेन इम्पोर्टेंट एम ऑफ बोथ आर सेम, टू डू गुड टू मैन एंड प्रमोट द कॉमन वेलफेयर. इंसानों का भला होना चाहिए, टू डू गुड टू मैन. पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों का एक ही काम है
कि जो भी आपके पास पॉपुलेशन है, जो भी आपके पास लोग हैं, जो भी आपके पास इंसान है, उनका भला होना चाहिए, दैट्स इट. एंड प्रमोट द कॉमन वेलफेयर. कॉमन वेलफेयर मीन्स सोसाइटी का वेलफेयर, राइट. नाउ when we talk about politics and ethics collaboratively, we have to understand the two things basically. इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, right? Ethics are somehow is internal, right? And politics is somehow which is external. But जब तक people are not clear with their ethics internally, society is not going to be, the way where we want to be. We all want that society will be the best place. Our society, your society, I mean Indian society, let's suppose, hypothetically, not hypothetically, but I'm talking as a whole, that Indian society should be best place to live in the world. तो उसके लिए individuals like you, me, organizations, association of people, they have to be ethically right on their part, and government and political parties and politics has to be stay right on their part, right? So when we talk about ethics, generally ethics is concerned with the principles of good for individuals. Ethics is generally concerned for the principles and the questions regarding principles, I should say. Ethics is generally considered and ethics is generally concerned with questions regarding the principles of good to the life for individual, principle of a good life for the individual, that individual has to live a good life. This is ethics, right? But when it comes to politics, politics cannot stay with the individual part. It cannot stay with the individual part. It has to think for the whole part. Okay, so basically if I have to say how they are related, कि एक एक है ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो single people will make a society, and societies will make the state will make the country. So they are related, right? Now the second point what we have to discuss on this particular point is politics. When we talk about politics actually is the rules and regulations. Politics through rules and regulations, actually I should say, politics through rules and regulations try to curb the unethical practices, unethical issues in the society. Okay, let me repeat it again. Politics through the rules and regulations and laws, of course, they try to curb, means control, the unethical practices in the society. While ethics, they are generally made keeping in mind that what is right and what is wrong when it comes to the general public. This is ethic. Ethic are not directly related, ethics and law are not directly related. They are related in this way, that law is somehow which try to protect the society from unethical practices, and ethics is something which is related with an individual terms. Let's suppose not individual, general terms, एक common sense में कि क्या सही और क्या गलत, right? I hope I'm clear. Okay, now what we have to understand next point is the difference between politics and ethics. Yeah, very simple things, not so vague and all this thing. Politics deals with political order in a state. Now I'm talking about in a general statement. Okay, politics deals with the political order in the state. What order actually you follow? Let's suppose कि I follow the political state Delhi. I'm living in Delhi, so I'm following this particular rule कि Delhi government एक rule ले आती है कि आगे से helmet के साथ साथ आपको एक रिस्ट वॉच भी पहनने की रिक्वायरमेंट है, एक रूल है दिल्ली गवर्नमेंट लेकर आ गई. रीजन भी कुछ भी हो सकता है कि उनका मानना यह है कि बार बार फोन निकालने से एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिस्ट वॉच पहनिए सो दैट टाइम देखने के लिए तो आपको फोन नहीं निकालना पड़े. So this is a political order, and how they have to implement. This is political thinking, and this is the political ways. Now, when it comes to ethics, it deals with the moral order of the society. Moral, I mean, what is right and what is wrong morally. It's the ethic. And when it comes to the politics, so it is a political order, right? Political order and moral order. Politics is somehow descriptive and defines what is. क्या है सही और क्या है गलत. Politics में clearly define है. When it comes to the law, regulations, उसमें clearly define है कि चोरी is the crime, murder is the crime. That's it. उसमें क्या सही है क्या गलत नहीं, क्या है, this is it in the politics. But in ethics, क्या सही है और क्या गलत ये भी लिखा होता है कि क्या सही है और क्या गलत, और ये कहीं लिखा तो होता है, कोड ऑफ एथिक्स में तो लिखा ही होता है, बट क्या सही होना चाहिए एंड क्या गलत होना चाहिए ये एक इंटरनल अपना है, नॉर्मेटिव एंड डिफाइंस
what ought to be, क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, right? It relates to external behavior of a person. As I told you, politics is somehow, it is the external part, and ethics is somehow inner development and consciousness of a person, right? And politics always deal with the end, कि what you have done and what you are doing, basically end wala part. And ethics, they deals with means and the ends as well. And the last point for today's session is, it is narrow in scope. Politics, yes, this is the reality. We think politics as a goal level. No, 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 no. Politics is a narrow in the scope, and ethics is a wider in the scope. Ethics is the wider in the scope. Okay, I hope I am totally clear to you. And to sum up the session, I would like to just add one thought of Mahatma Gandhi, that he said, "What is morally wrong? What is morally wrong cannot be politically right." I'm repeating it again. What is morally wrong cannot be politically right. With this is the end of the session, people. Thank you so much for being with me. And please, if you haven't subscribed to our channel, Education with KRCHE, you should subscribe right now. Okay? Have a nice day. Take care.